शुभ प्रभात। रंगमंच पर उपस्थित प्राचार्य, आदरणीय प्राचार्य सर, आदरणीय उप प्राचार्य सर, मेरे अध्यापक साथी और प्यारे छात्रों, आज आप लोगों को विदित है कि 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर हम मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद भारत की वह हस्ती है जिसके पदचिन्हों पर हम चलते हैं। उनके विचार जो है वह भारतीय संस्कृति की गरिमा को पुनर्जीवित करते रहते हैं। उन्होंने कहा था कि भारत को संजीवनी देने का कार्य हमारे राष्ट्र के युवा वर्ग ही कर सकते हैं। प्यारे छात्रों, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था नव युवकों को, उठो जागो चलते रहो जब तक तुम्हें ध्येय की प्राप्ति न हो जाए, और इस अवसर पर हम इसे 12 सितंबर से सिलसिलेवार आगे कार्यक्रम मनाएंगे। Believe in yourself and the world will at your feet. Respected Principal Sir, Vice Principal Sir, all respected teachers and my dear friends, have a cheerful day. Swami Vivekananda was a revolutionary who yearned to bring changes to society. In his early life, he was an active member of Brahmo Samaj, a religious movement founded by Ram Mohan Roy in 1828. He participated in many social movements and fought to eliminate the social conveyance of early marriage from society. He promoted education and wanted everyone to be literate irrespective of any social or cultural denominations. With that, I am calling Sudhija of class 7 with her speech. सभी को सुप्रभात। आप सभी को स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं। हर वर्ष 12 जनवरी को करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है। इस दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के ओजपूर्ण विचार हमेशा से युवाओं के प्रेरित करते रहे हैं। इसलिए साल 1985 में भारत सरकार ने स्वामी जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय के ओर पर मनाने का फैसला लिया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी के घर हुआ था। वह बेहद कम उम्र में विश्वख्याति प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु बन गए थे। 1893 में अमेरिका के शिकागो में उन्हें विश्व धार्मिक सम्मेलन में उन्होंने जब भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया तो उनकी विचार से पूरी दुनिया उनकी ओर आकर्षित हुई। अब आप सभी को फिर से एक बार राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती की शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, Sudhija. When an idea exclusively occupies the mind, it is transformed into an actual or physical state. Now, I am inviting Gauri of class 7 with her speech. Here I am to speak about National Youth Day. 12 January is celebrated as National Youth Day. Youth is the future of every country. They are the success of energy, innovation and catalysts of progress and change. To ensure the purpose and possibilities of the youth, the Government of India decided to celebrate January 12 as National Youth Day. National Youth Day or Rashtriya Yuva Divas is celebrated every to commemorate the birth anniversary of Swami Vivekananda. Celebrating National Youth Day is to keep motivating youngsters around the country with the ideas and ideology of Swami Vivekananda. Also thought the celebration, the Government of India teaches the youngsters about their fundamental rights and duties. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ನಾನು ಇಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಏಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಿಲ್ಲದಿರಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ಸಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು 1863 ಜನವರಿ 12ರಂದು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರನಾಥ ದತ್ತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದತ್ತ
ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ತರ್ಕಬದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಲಿತರು ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನರೇಂದ್ರನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡುವ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆತನದು. ಬುದ್ಧಿವಂತ ನರೇಂದ್ರನ ಚರಿತ್ರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಮುಖ್ಯ ಅನುಯಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪರಮ ಶಿಷ್ಯರು ಆಗಿದ್ದು, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you so much, Shreya. Whenever we attain a higher vision, the lower vision disappears. With that, I am inviting respected Principal Sir to share his thoughts with you. सुप्रभात सभी को। आप सभी को इस विश्व हिंदी दिवस के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं।